Now, the landmark case which we cannot afford to miss is this one, Rylands versus Fletcher. 1868 का case, English. The basis of the liability in the rule of strict liability is explained by Blackburn Justice, who had propounded this rule. देखिए, इस आज के सारे सेशन में दो केस आपको याद कर रहे, दो क्या बल्कि तीन कर लो तो बहुत बढ़िया। ये तो है, एक दूसरा होगा एमसी मेहता का, तीसरा होगा यूनियन कार्बाइड। ये तीन केस और कुछ याद करने की जरूरत है। कंसेप्ट प्लस दीज थ्री केसेस, then we'll come to the conclusion. What Blackburn says, the rule of law is that the person who for his own purposes brings on his land, he is not keeping in पड़ोसी's land, अपने घर में, अपने जगह पे, and keep there anything likely to do mischief. पहला फैक्टर आ गया. Yes. If it escapes, condition must keep it in at his peril, अपनी जिम्मेवारी पे. भैया आप नहीं पढ़ रहे, मैं पढ़ा रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे, यू आर डूइंग इट एट योर ओन peril. अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा नुकसान नहीं कर रहे. मैं तो कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, आप नहीं पढ़ रहे. You are doing that thing, that mistake at your own peril. अपनी risk पे कर रहे हो. So that means the risk or the liability is on this he. And if he does not do so, that means if he, if he is not doing so, is prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape. वो नेचुरली निकल गई. देखिए, आप बदरपुर थर्मल पावर प्लांट ले लीजिए, अब तो बंद हो गया दिल्ली में, बहुत ऊंची चिमनी है उसकी. टरबाइन को चलाने के लिए what is needed is energy, which will convert water into, steam, which will rotate the turbine and the electricity will be produced. Simple way. There can be different technologies. But what Badarpur power plant was using was a very primitive technique. Burning of coal. Get the energy from burning of coal. Now, you know very well, the coal causes, when it burns, it causes a lot of harmful gases. Carbon dioxide, carbon monoxide, many others. And if they are let loose in the environment, it will definitely cause air pollution. And if the levels of those dangerous, harmful gases go up more than the limits which a human body can sustain, survive, then it will cause damage to the humans. And that is why that plant was shut. अब नहीं चल. The authority said, you use any other better technology, but don't pollute the environment. So there also the gases are escaping. Now, friends, again, जो इंटरनेशनल लॉ में हमने क्या पढ़ा था, एनवायरमेंट लॉ में क्या पढ़ा था? स्मेल्टर केस तो पहला था ना, वो तो हो गया. उसके अलावा हमने क्या देखा कि जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ही विल हैव टू पे. ही इज लायबल. पे का मतलब क्या हुआ? He is liable. So what kind of material technology you are using
whatever you may do, take care that it is not causing any damage to other person. If you do it, you will have to be liable for that. So same is the case here. Here, that particular thing is not mentioned. A rule has been framed. Rule under Rylands versus Fletcher is this rule by Judge Blackburn. Chaliye. Now, these are the facts. I should not have put it because they are there in your notes, but for better understanding, the defendant got a reservoir constructed through independent contractors over his land for providing water to his mill. There were old disused shafts under the site of the reservoir which the contractors failed to observe and so did not block them. When the water was filled in the reservoir, it burst through the shafts and flooded the plaintiff's coal mines on the adjoining land. बड़ा सिंपल से फैक्ट्स है, अंग्रेजी में लिखे हैं. अब the defendant did not know of the shafts. ये देखो, इसको मार्क करिए. That means कोई इंटेंशन नहीं है उसकी नॉलेज में भी नहीं है. So definitely it is not a crime. क्रिमिनल एंगल तो निकल गया, ना इंटेंशन है ना नॉलेज है. And had not been negligent. अब ये आ रहा है टॉर्ट की लाइबिलिटी के घेरे में कि क्या वो नेग्लिजेंट था या नहीं था. नेग्लिजेंट था तो सीधा सीधा बन गया टॉर्ट. बिल्कुल टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस पढ़ेंगे बाद में. बट वेयर इज ड्यूटी इज देयर एंड ही हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी, वो तो हो गया. नाउ ऑल्दो द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैड बीन. अब यहां पे लाइबिलिटी किसकी डाली जा रही है? नॉट ऑन द कॉन्ट्रैक्टर्स, नॉट ऑन द कॉन्ट्रैक्टर्स. इट इज बेसिकली द डिफेंडेंट. देन even though defendant had not been negligent, he was liable. The independent contractors were negligent. They failed to notice the shaft. Defendant could not plead that, look, I was not even aware of this. This is the rule. Try to catch the rule in your mind. इसकी एक डिपिक्शन बनाई है, देखिए कि ये वाटर रिजर्व्स हैं. दीज आर शैफ्ट्स. शैफ्ट्स होती है तो अंडर द ग्राउंड पाइपलाइंस, उनको शैफ्ट या कोई रास्ता बनाओ अंडर द ग्राउंड विच इज नॉट विजिबल फ्रॉम नेकेड आईज. देन दिस द वाटर पाथ विच फ्लडेड द माइंस ऑफ फ्लेचर. ये उसका रिजर्वायर था जहां से उसकी मिल को पानी जाना था, लेकिन इस शैफ्ट की वजह से जो अंडर द ग्राउंड थी, वाटर निकल के इसके यहां पे फ्लडिंग हो.